Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am hoping that you all will be enjoying the best of your health. Our today's topic for discussion is crime and juvenile delinquency as a social problem. Crimes exist everywhere. No society is crimeless. It affects everyone. Some people are criminals, others are victims, while some are both. News on TV, social media, and print media talk about crimes every day. A crime is any act that is labeled as such by those in authority, is prohibited by law, and is punishable by the governments. For example, a person who robs a bank, actually he is doing an act that is labeled as crime, which is prohibited by law and which is punishable by governments. According to burners and tictors, क्राइम्स आर एंटी सोशल बिहेवियर. अच्छा, ये टिक्टर्स है, कोई दूसरा लफ्ज नहीं है. बलसा न देखा ख्याल का वही. नाउ व्हाट इज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी? आपने ये नाम सुना होगा. जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड, एन immature person, and delinquency means crimes committed by a child, or the actions which, if were committed by an adult person, would be considered as crimes. Okay? We have deviancy. Deviancy is the violation of cultural norms. Norms guides almost every human activity, so the concept of deviance is so broad. One category of deviance is crime. Here, remember one thing. एक होता है crime, एक होता है डिविएंसी. इन दोनों में फर्क है. एक होता है फिर क्रिमिनल और एक होता है डिविएंट. इन दोनों में भी फर्क है. अच्छा, अब डिविएंसी क्या है? इट इज द वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स. ओके, तो डिविएंसी या डिविएंट एक्शंस, ये कल्चरल जो नॉर्म्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो वो डिविएंसी करता है. इस पे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती जितना क्राइम पे होती है. नाउ व्हाट इज क्राइम? क्राइम इज एक्चुअली द ब्रेकिंग ऑफ लॉ. लॉ की खिलाफ वर्जी, कोई गवर्नमेंट, एक स्टेट की जो लॉ होती है, उसका जो कानून होता है, तो कानून को तोड़ना ये क्राइम कहलाता है. फिर क्राइम की भी दो किस्में होती हैं. एक होता है ओमिशन ऑफ क्राइम और दूसरा है कमीशन ऑफ क्राइम. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो कमीशन ऑफ क्राइम जिन चीज़ों से मना किया गया है और लोग वो चीज़ें करते हैं, इसको क्राइम कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को नाजायज़ कत्ल करना, चोरी करना, डाका डालना, कार वगैरह चोरी करना, किसी पे अटैक करना, किसी को ज़ख्मी करना, ये सब चीज़ें ये मना है कि ये नहीं होंगी. अब अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता है तो एक्चुअली ही इज़ कमिटिंग क्राइम. और दूसरा है ओमिटिंग और ओमिशन ऑफ क्राइम. जिन चीज़ों का करने को कहा गया है कि ये चीज़ें आपने करनी हैं कानून में, और कोई शख्स वो काम नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, तो एक्चुअली ही इज़ ओमिटिंग क्राइम. लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपने यूटिलिटी बिल्स वक्त पे अदा करने हैं, ठीक है, और कोई वो अदा नहीं करता. टैक्स आपने देना है लेकिन लोग टैक्स नहीं देते, इसको कहते हैं, तो ये भी क्राइम्स है और इसको कमीशन ओमिशन ऑफ क्राइम्स कहते हैं. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम्स. सो देयर मे बी अदर categories are organization of crimes, but for the sake of understanding we are discussing a few of them. Okay, so one category is murder. We have forcible rape, robbery, aggravated assault, burglary, larceny, and arson. Now we are going to discuss these categories one by one in detail. Okay.
First, we have murder, the willful killing of one human being by another. किसी को कत्ल करना. Forcible rape, sexual violation of a person by force against the person's will. तो ये बात यहाँ पे याद रखें, sexual activity of a person with other person other than his or her legal partner despite of their consent is still a crime in Islam and is punishable according to the Holy Quran accordingly. अब अगर कोई इस पे मज़ीद पढ़ना चाहता है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सूरह नूर की तफसीर देख लें तो आपको पता चल जाएगा. उसमें पूरा तफसील है कि अगर कोई शख्स एडल्ट्री करता है, फॉर्निकेशन करता है, फोर्सिबल रेप करता है तो उसकी क्या क्या सज़ाएं होंगी. अच्छा जी, अगला जो है ना वो रॉबरी, टेकिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम अ पर्सन बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स. सो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ट्रांसलेशन लाजमी है, ज़रूरी है, तो वो मैं करूँगा, अदरवाइज आप समझते हैं इसको. एग्रेवेटेड असॉल्ट, एन अनलॉफुल अटैक बाय वन पर्सन ऑन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग ग्रेट बॉडीली इंजरी. बर्गलरी, ब्रेकिंग इन एंड टेकिंग समथिंग अवे. घर में घुसना, ताला वगैरह तोड़ के घुसना, दीवार पलांग के घुसना और कोई चीज़ चुरा लेना, इसको कहते हैं बर्गलरी. लार्सनी, थेफ्ट एक्सेप्ट ऑटो. ऑटो के अलावा मतलब कार वगैरह, व्हीकल वगैरह चोरी करने के अलावा जितनी भी चोरियां हैं उसको लार्सनी कहते हैं, क्योंकि ये ऑटो, इसको फिर ऑटो थेफ्ट कहते हैं या व्हीकल थेफ्ट के जुमरे में आता है. अच्छा, एक होता है आर्सन, विलफुल बर्निंग ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी. किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की जायदाद को आग लगाना. लाइक फॉर एग्जांपल किसी की फसल को आग लगाना, गले की गोदाम को आग लगाना, घर को आग लगाना, दुकान को आग लगाना वगैरह, इसको कहते हैं आर्सन. ओके, दच्छा बुसाड़े ता और अचवल दा हम ये एग्जांपल ले. नाउ वी हैव few types of crimes: white collar crimes, crimes against property, violent crimes, hate crimes, organized crimes, and victimless crimes. Let's dive in detail. What are violent crimes? Violent crimes are murders, forcible rape, robbery, and aggravated assault. Crime against property. Crimes against properties are burglary, larceny, motor vehicle theft, and arson, etc. Victimless crimes. Crimes such as prostitution, illegal gambling, illegal drugs, and vagrancy. Vagrant means a person, mostly a prostitute or drunk, who has no established residence and wanders idly from place to place without lawful or visible means of support, are considered as victimless crimes because he or she harms no one but the person committing the act. Okay? इसका मतलब ये है कि विक्टिमलेस क्राइम में कोई विक्टिम नहीं होता, बल्कि विक्टिम वो पर्सन खुद होता है जो ये एक्शंस करता है. लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ओके, इलीगल गैम्बलिंग, इलीगल ड्रग्स एटसेट्रा. इसमें शख्स अपने आप को नुकसान पहुंचाता है. ओके, वाइट कॉलर क्राइम्स. एडविन सदरलैंड काइंड द टर्म वाइट कॉलर क्राइम्स to describe offenses committed by individuals of high social status in the course of their professional lives. Politicians, corporate commits crimes of this type: misrepresentation, fraud, tax evasion, like tax na dena, embezzlement, khurdbud, price fixing, toxic pollution creation, etc. Okay. Onward, we have organized crimes. Crimes committed by organized groups, typically involving the use of illegal goods and services to others. They do drugs trade, illegal gambling, prostitution, and weapons smuggling, etc. There are organizations of professional criminals who control some business through violence or threat of violence.
the dons or godfather that head crime organizations often lead relatively quiet lives. ये जो डॉन और गॉडफादर वगैरह होते हैं तो ये लोग खुद आराम से बैठते हैं लेकिन इनके लिए काम ग्रुप करते हैं. अच्छा जी, हेड क्राइम्स. The term refers to a criminal act against a person or person's property by an offender motivated by racial or other bias. Bias mean which is not based on objectivity. Okay? A hate crime may express hostility towards someone's race, religion, ancestry, sexual orientation, or physical disability.